Hello, hello, hello. Welcome to another episode with Cricket Panchayat. We are doing a long episode after a really long time. एक महीना हो गया हमको शूट करते हुए. Last time we shot like 17, 18 shots together and सब कुछ डाल दिया हमने. Please go check that out. Today we have a very, very special guest. We have Shubham, Siddhant Bhatter, Abhishek Reddy, Ayush, and Vedant. These are the special guests we have. Apart from that, I have a friend. I have someone. He's special to me because he's the only one who's like a cricketer, and I know him, so I can talk to him about cricket. And that's Maan K Bafna. That's how they call him in TNPL. Hi Man, how are you? कैसा है भाई? ऑल गुड भाई ऑल गुड। तुम सब कैसे हो? All good, all good. And please tell us about yourself. कुछ थोड़ा introduction मिल जाए आपके बारे में. So yeah, I'm a Maan Bafna. I'm a professional cricketer. Played all age group crickets and playing for TNPL. Currently, I'm playing with iDream Karakudi Kalai. And yeah, and about my education and stuff, I did my schooling in Coimbatore. Baki sab Chennai, my undergrad and post graduation I did in Chennai. So yeah, that's about it. And he's married. He stays in Chennai. अभी कोयम्बटूर में है. Trying to catch him Yeah. for a month. I have Man's really close friend with me, who's known him since his childhood. वेदांत ऐसे ऐसे करने की कोशिश मत कर. वो I'm clearly talking about Shubham. So hi Shubham. Please tell us something about Man which we all don't know. There is nothing about Maan that you guys don't know. Uh, बड़ी बड़ी डींगे फेंकता है. That's Maan for you. हाँ भाई अभी क्या बोला था अश्विन को लाएगा पॉडकास्ट में क्या बोला था अश्विन लाएंगे भाई, भाई पक्का लाएंगे। ठीक है we'll see. So guys, today we are going to ask Man a couple of questions, like a lot of questions, and we are going to get to know about his journey as a cricketer. I'm sure none of you know about him, so we'll get to know about him कि क्या journey रही है क्या रहा है. So we'll start with Shubham, what do you want to ask him? क्या लगता है तेरे को क्या क्या Uh, I, like you have mentioned before, I've known Maan's since my study days. We've been together for years now that we don't have count of. I have seen him when he started his cricket career, when he went for selection for under 14 districts, and he was bowling in the nets. He was a fast bowler then, and the very first ball which he bowled during his selection, the ball went over the nets. Exactly. It went over the nets. That's I how I didn't started my know. cricket journey. That was my first proper district selection. So as That he was mentioned, yeah. that was his first proper district selection. So I have known him through all his phases. So that's how I've seen him from that time. So my question to you is, Man, from you starting your journey from the nets of SNR, when you bowled that ball over the nets, to this time when you're playing TNPL with all the international grades right now, how does it feel? What has the journey been like? Feels really good. Journey has been crazy. Lot of challenges, lot of good memories, lot of ups and downs. So yeah, as he mentioned, my first under 13 district selection, when I went for the selection, तो उन्होंने मेरे को बॉल दिया. I was a fast bowler back then. तो फर्स्ट बॉल आई रियली मतलब ऐसे ही डाला, नेट के ऊपर चला गया. वो सेकंड बॉल डाला बैट्समैन के ऊपर, सीधा बीमर डाला. और थर्ड बॉल आई काश पिच तो कर दे. थर्ड बॉल डाला, मैट के बाहर पिच हो गया. एंड आई वाज लाइक शिट, क्या मैं इतना मेहनत किया, ये क्या हो रहा है. देन आई वाज लाइक उन्होंने मेरे हाथ से बॉल ले लिया. पहले सबको 12-13 बॉल मिल रहा है, मैंने मेरे हाथ से 3 बॉल में बॉल ले लिया उन्होंने. फिर मेरा बैटिंग आई डिड डिसेंट. ओके फाइन. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं सेकंड राउंड तक जाऊंगा. बट जैसे मैंने बॉलिंग डाला तो दैट वाज माय हॉरिबल एक्सपीरियंस. फर्स्ट अंडर 13 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन. उसके बाद जर्नी बिगिन. नेक्स्ट ईयर आई केम अगेन एंड आई डिड वेल. फ्रॉम देयर आई प्लेड माय डिस्ट्रिक्ट्स अंडर 13, 14, 16, 19. From there my journey started playing districts, then represented state. Then I moved to Chennai because वहाँ थोड़ा better opportunity था. इसके लिए I moved to Chennai. यहाँ पे थोड़ी facilities कम थी, तो we decided that चेन्नई में better रहेगा. तो चेन्नई जाके I started my journey. Now playing TNPL, so I'm really grateful. So I just want to thank my parents because of their support. Whatever little I've achieved, it's all because of them. I नहीं can भाई बहुत vouch अच्छा for that अचीव किया तूने. because I can vouch for that because I know Man and I have been in the same school, and I remember that his dad every day dot 3 o'clock when the school gets over, he would be there by 2:50 waiting for him. He will take him home. He will get ready. He will have his lunch, and then his dad will drop him
which all the way from his home to the nets that he practiced, which is around 7-8 kilometers, and go back to office, and again goes to pick him up from the nets and goes back to office. So that was his dad's routine from the time he started playing cricket, which is for I think easily for 15-16 years until he started driving his two-wheeler and all of that. So kudos to uncle, and well done. Yeah, this just shows, no, being a cricketer, it's just not the sacrifice of the player himself, it's about the family, everyone. I know personally मान, right? मैंने देखा इतनी सबकी शादी यहाँ पे मिस किया है मान ने. I know we all उसको गाली देते, सब कुछ देते, but that's the sacrifice he has to give to pursue his career. And not everyone knows. सबको लगता है यार क्रिकेटर है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, but no one knows what the sacrifices the parents have to go through, the person has to go through, whoever he is with, they have to go through. It's a tough life, it's not very easy. So yeah, great journey, man. I didn't know you were a fast bowler. I'm glad that you are a left arm orthodox spinner and a left-handed batsman now. And he's Yeah. our very own in-house Jadeja. Vedant, I think the second closest to Man in this panel. Hi Vedant, you've been dying to talk. uh, do you have anything to share about Man with us? So yeah, definitely. I mean, having your best friend come on TV is a big thing. And I remember the Man's first season in TNPL, he was in the substitutes, but we all still watched the game. And whenever Man wore that substitute jersey and came in the field with water, छोटा भी ऐसे दिखता है, and we're like, wow, मान दिख गया. And to now, being like, हाँ, मान one down या two down आ ही जाएगा, knowing that it's been a crazy journey. So many teams he's changed, being substitutes, main, then again substitutes, then again main, to winning them the games. It was crazy. And as his best friends, we have watched everything and we are extremely proud of it. Definitely So very yeah, proud of Man. yeah. Like we never tell it to him on his face. मुंह पे तो गालियां देते हैं इसको, but यार आज मान देखो एकदम लाल लाल हो चुका है, एकदम शर्मा रहा है, इतना कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहा है इसको. Vedant, what do you have to ask him? कुछ क्वेश्चन है So, आपके लिए? so I wanted to ask him. 2016 was his first year, and from 2016 he's played multiple teams. So Man, which was your favorite franchisee, or the most where you most enjoyed playing with? Definitely it would be iDream, because out of 8 seasons, 7 seasons, I mean, yeah, 7 seasons, 5 seasons I played for iDream. So definitely I'll feel कि ये मेरा home team है. मतलब मेरे को एक comfort zone मिलता है अगर मैं iDream में खेलता हूँ तो. बाकी मेरा फर्स्ट सीजन में मदुरई के साथ था, तो 2016 इट वाज अ बिग इवेंट TNPL में. तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट होस्टिंग दिस तमिलनाडु प्रीमियर लीग. सो एवरीवन वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट. तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ा कि ओके हमको बस खेलना है, TNPL क्या होता है, बस जस्ट खेलना था. बट जैसे मैं iDream में सिलेक्ट हुआ, iDream में मैंने अच्छा किया, तो आई विल डेफिनेटली फील iDream इज माय कंफर्ट जोन. मैं iDream के लिए खेलता हूँ तो मेरे को एक कंफर्ट मिलता है, मतलब या. Let's move on. I'd like to go to Bhatter. Bhatter has known Man because Coimbatore में same शहर में, but I don't think he knows as much as we do. But Bhatter, तेरे को क्या it's a dream. Actually, Bhatter, तेरे को नहीं लगता कि it's a dream to talk to a professional cricketer? Like मेरे को तो ये लगता है. I've told Man this also. Like उससे बात करने कभी-कभी ये लगता है यार, एक कभी-कभी I feel starstruck कि यार एक professional cricketer है. I can talk to him about stuff and all of that. Get his insights about things. What do you think, Bhatter? यार so मतलब I've known Man much before you have known him, Khush. I've seen him play for in the SNR nets. Yeah. Everybody used to call him Duppi. I remember Uncle also True. standing next to the nets and watching him bowl. Again, he was a left arm pacer back then. But yeah, it's surreal. I know anytime somebody, if I'm talking to somebody about cricket and the topic of domestic cricket comes in, so I always proudly say, I know this guy. He plays in the TNPL, and they said, "Oh, has he played? What does he?" And then I think the recent 50 that you scored, right? In the season, I
the next step for you, man, as a cricketer? Do you see yourself playing in the Ranji or the IPL? What do you think? कि TNPL के बाद तेरे को क्या लगता है? What is your aim? India jersey. Obviously, India jersey is the final. Everyone wants to do that. But what are your short-term goals, long-term goals, and what do you think what do you think you can achieve? Which is, very achievable as well. Definitely. So there are two routes. So you want to play Test cricket longer version, so it's Ranji. And if you want to focus on white ball, तो TNPL से direct you get into IPL. Because TNPL आने के बाद सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि to you do well in TNPL because सब IPL के scouts सब watch कर रहे हैं. So I feel it's a shorter route. So you do well in the TNPL, IPL के scouts आपको trials के लिए बुलाएंगे and you get into IPL. So it's like that. So my main focus is white ball cricket. क्योंकि अभी फ्यूचर इट्स ऑल अबाउट व्हाइट बॉल क्रिकेट. अभी आई थिंक वो टेस्ट क्रिकेट का वो कम हो रहा है, बट पर्सनल चॉइस मेरा प्रेफरेंस इज व्हाइट बॉल क्रिकेट. यू डू वेल इन TNPL, गेट रिकॉग्नाइज्ड देयर, गेट इनटू IPL, सो फ्रॉम देयर यू प्ले फॉर द कंट्री. बिकॉज अभी अभी आप जनरल इंडियन टीम में भी देख लोगे, जो IPL में अच्छा कर रहा है, दे आर गेटिंग पिक्ड. That's सो true. दैट Jadeja, Ashwin. has become the shorter route, I feel. पहले क्या था, आप रणजी खेलो, दुलीप ट्रॉफी खेलो, सब खेलो. तो अभी TNPL IPL आने के बाद it has become a easy route for everyone. But definitely it takes time. You do well one season, you get recognized. So my Basically, you personal have a goal is platform to go ahead through TNPL and IPL and everything. It gives you a launching pad. उसके बाद आप जो कर रहे हो, it's up to you, right? And it just recognizes talent from every part of the country. So that's exactly. your route which you want to Yeah. take. So my personal Definitely, goal is focus on white ball cricket. that's very right because we've seen Bumrah come from IPL. We've seen so many players, right? We've So seen many them. players, They've done exactly. and they've done well in all three formats. ये भी नहीं है कि खाली मतलब Bumrah has done only in one format. We have Ashwin Jaddu also. They were found in IPL. धोनी ने शुरू किया था उनको लेके I'll आया give you था. one example of वरुण चक्रवर्ती. तू तमिलनाडु से ले ले भाई, वो 27 years तक उसने कुछ नहीं खेला था. आई स्टिल रिमेम्बर वो हमारे टीम के लिए नेट बॉलिंग के लिए आता था. एंड Right. ही मास्टर दिस वेरिएशन, मतलब मिस्ट्री का मास्टर किया. नेक्स्ट ईयर सीधा TNPL में डिड वेल. ही वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. IPL picked him. From there it's history. He played World Cup. I mean, Yeah. just matter of 3 years, bang. And Yeah. and one more example I want to give you, Sai Sudarshan. मेरे Yeah. आंखों देखे वो 3 years में he did well in TNPL, got picked in IPL. Luckily he got chance in IPL, he proved, and his journey is like okay, अभी यहाँ से start हो गया. So it's a big platform. TNPL से लोग recognize हो रहे हैं. Yeah. TNPL I think is one of the best state leagues in India. I feel like सबसे ज्यादा लोग वो देखते हैं and I think बहुत थोड़ा सा मतलब बहुत टाइम से भी चल रहा है. Other leagues have been started to come now. महाराष्ट्र में एक चल रहा है, एक कर्नाटका में चल रहा है. And Everywhere it's after going. IPL, I feel TNPL is the most watched league. मतलब Yes, इतना, yes. it's इतना so ज्यादा popular. है. रिकग्निशन है TNPL में. वी हैव हैड प्लेयर्स. आई थिंक शाहरुख खान भी TNPL में बहुत अच्छा कर रहा है. वी हैव हैड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु Natarajan. कम Natarajan, Vijay Shankar, Sai Kishore, Sai Sudarshan. We have so many players who are there from TNPL who can potentially come into the Indian team or have played for India. It has a great effect, and I think we are all thankful to leagues like this because सब जगह से ऐसे talent scout हो जाता है and you can actually get players from all over the country. Next, I'll like to go ahead with Reddy. Reddy is meeting Maan for the first time. Reddy ने कभी मान को मिला नहीं है. Maan also is meeting Reddy for the first time. So Reddy क्या पूछेगा तू भाई? एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है तेरे सामने, तो क्या पूछेगा? So it's so overwhelming to see all your childhood friends gather here, talk about all their experiences, जो भी आपके साथ उन्होंने साथ में देखा है, you know, all these experiences are so nice to hear. You know, all of us probably have gone through that phase, but at this point of time, मेरे लिए it's like a pure goosebumps sitting in front of a professional cricketer talking directly. कि एक सेकंड थोड़ा ज्यादा इज्जत दे रहे हैं मान को गाइस. मतलब थोड़ा सा मतलब डायल डाउन कर देते. No. From an outsider point of view, this is exactly what we are feeling, and it's so glad ki TNPL is giving all players like you great platform, and also the way you have portrayed
the shortest route, and also the focus that you want to give in. तो मेरे लिए एक क्वेश्चन है, which inning or what would be that career changing moment for you in TNPL? Either it could be in terms of your playing innings, or any interactions that you would like to share with any of those folks that have represented India that would change your career. So yeah, there are two innings. First, this year's TNPL knock. It was against Trichy Grand Cholas because पूरा season मैं खेला नहीं था. It was very difficult for me personally because I mean, being part of iDream for 4 seasons, I played every game. And this year, when they picked me, first few matches I was not there. I felt really bad, but I was training with mental conditioning coach. He was like, "You just stay in the present. Your chance will come." So yeah, I was just in the present. In my mind, I knew मेरा chance आएगा. But I don't know कब. And like Sai Kishore was like before the game, man ready रहना, कभी भी आ सकता है. You'll go as an impact only. I mean, this impact rule has changed wonders for me, I guess. So Sai Kishore was like, तू ready रहना, कभी भी मौका मिल सकता है. अगर wickets जल्दी गिरे, तो you might go as an impact. और luckily वो दिन ऐसे ही हुआ. We were like 32 for 5, I guess. And from there, I was like, Sai was like, तू pat कर ले, तेरा chance है, you might get in. So from there, it changed the momentum. See, that was the best knock in this year's TNPL मेरे हिसाब से personally, because वहां से हम जीते, we qualified, we ended up second in the table. So as iDream, we have never qualified. From past 5 seasons, we have never qualified. We always end up in sixth or seventh, or maybe एक season we ended up fifth. So this year, qualifying was the biggest deal. तो वहां से हम जीते, क्वालिफाई हुआ, तो ये मेरे लिए पर्सनल दिस ईयर का मेरा पर्सनल फेवरेट था. And तो और एक नॉक है, मैं उसको बोलना चाहता हूँ. वो सेकंड डिवीजन में था when I started off cricket. So basically, Tamil Nadu mein there are totally 6 divisions. First being the topmost. So second mein I got an opportunity to play. So when I went in, it was like 10 overs, 70 odd runs to win. फिर लास्ट ओवर में सिमुलेशन आया 1 over 15. फिर वहां से 2 balls 8, I hit a 6 and a 2. So वहां से हम जीते and we qualified for the first division. So वहां से जिस ग्राउंड में हम खेल रहे थे, तो उस कोच ने मेरा वो इनिंग्स देखा. तो वो इनिंग्स देख के मेरे को फर्स्ट डिवीजन में अपॉर्चुनिटी मिली. wow. तो फर्स्ट डिवीजन इज लाइक मेन. यू प्ले फर्स्ट डिवीजन, you get into Ranji, you get into everywhere. So first division is like main criteria in Tamil Nadu League. So these two are my best knock. That has changed something for me. Matlab, it has given life. This Yeah. year's knock, Reddy. I'll tell you one thing about this year's knock, and everyone in the panel who watched it. Like, I'm sure Shubham, Vedant, and Ayush and myself. I don't know if Bhatter watched it live or not, but we all watched it live. Yeah. 32 for 5 था भाई, और जब ये आया ना भाई, हमारी सबकी गांड फटी हुई थी. I'll tell you why. Because इसको पूरा सीजन खिलाया नहीं. ठीक है, हम लोग ऑलरेडी मतलब इसको हर मैच में मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, एंड वी रियली वांटेड टू परफॉर्म, एंड दैट वाज द वर्स्ट सिचुएशन टू सेंड हिम इन. लाइक, तू सोच ना भाई, पूरा सीजन नहीं खिलाया, 32 फॉर 5 पे उसको भेज रहे हैं, एंड फ्रॉम देयर टू एक्चुअली विन द मैच, लाइक ही सिंगल हैंडेडली वन द मैच फॉर आई ड्रीम तिरपू तमिलन्स दैट डे. दैट इज फॉर श्योर. No, सिंगल हैंडेडली. I remember you guys मतलब texting on the group या कि our team is एग्जैक्टली on the ground, and as soon या as I switched on, it was 32 for 5, and and like, let's see how he does, and you just blew the mind. And I'm so या glad मैन, कि लाइक you आई. were one of those main pillars that took your team, iDream team, to the top qualifiers this time, Okay. and I hope you continue this. I Definitely. texted Maan this. I told him God's plan. I sent him that also, right? And I was like, wow man, मतलब तू सोच ना भाई, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आया भाई, खेल रहा है, मैच खेल रहा है, ठीक है, समझ रहा है, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आके the most crucial moment, and he won it for the team. I think that's clutch, like clutch god बोलते हैं भाई इसको, मतलब that's one of the like विराट कोहली's kind of a knock I felt. थोड़ा ज्यादा ही Let's not उड़ा रहे मान को, let's not but forget the contribution by Ganesh as well, Exactly. which yeah, supported Maan. yes, So Yeah, it that was the 87 runs partnership. I mean, its role was also very important. Matlab, it was not all about me. It was that partnership changed the game.
yes, that partnership And चाहिए. that day I realized one thing, everything happens for a reason. So Yeah, ये भी हो सकता था मैं खेला नहीं 5 मैच, आई कुड हैव वॉक डाउन हो गया होता, तो मतलब ऐसे होता. तो स्टिल हाँ. आई इन माय माइंड आई न्यू कि टाइम आएगा, जब आएगा यू विल प्रूव इट. सो वो इनिंग्स के बाद मेरे को रियलाइज हुआ दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. No man, that innings was really special to watch for us. I don't know, like तेरा feeling तो I can't describe, but that innings was really special for us to watch. We have Ayush with us. Hi Ayush, कैसा है भाई? सब ठीक है? Super, super. Hi. Hi, हाँ, Maan. our very own Raja. So तेरे को क्या पूछ रहा है भाई मान से? नहीं नहीं मेरे को वही आई जस्ट ऐड अप समथिंग अबाउट द लास्ट नॉक, जो लास्ट नॉक के बारे में बात हो रही थी. मैं जब ये टीएनपीएल स्टार्ट हुआ था, आई सेड मान इफ यू रिमेंबर्स भाई, लास्ट सीजन की तरह एक छक्का मार दिया, वापस छक्का मार के आउट मत हो जाना. और वो जब वो आया 34 पर, आई वाज लाइक अभी छक्का मारा, बस बस रुक जा, एक सिंगल ले ले. दैट वाज द बेस्ट नॉक मचा, सीरियसली दैट वाज द बेस्ट नॉक आई हैव एवर सीन. ठीक है, तो मैंने तेरे को देखा, तू फास्ट बॉलिंग पे किया, देन यू स्विच टू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन स्टाइल किया. एंड पिछले 1-2 सीजन में यू यूज्ड टू बॉल आल्सो, फॉर ई ड्रीम आल्सो यू बॉल्ड. एंड तो मेरे को यही पूछना था, विल वी सी मान एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, एज अ ऑलराउंडर, और राइट नाउ तू सिर्फ अपने बैटिंग पे स्ट्रेंथ करके, उसको ज्यादा फोकस करके अपनी पोजीशन बना रहा है? What? Because हमको I want you to see us an all rounder, because तो bowling भी अच्छा करता है, and you bat also well, so you can be a good finisher in the end. So that is what I feel. That is in my opinion. So what are you planning right now? तेरा focus किस पे है मेरे साथ? डेफिनेटली आई एम वर्किंग ऑन माई बॉलिंग ऑल्सो. बॉलिंग भी इम्पोर्टेंट है मेरे जिस स्टेज में मैं हूँ. बट क्या है, मैं जैसे जिस टीम के लिए खेल रहा हूँ उस टीम में अटक रहा हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, मिस्ट्री बॉलर. तो मेरे को दे आर यूजिंग मी एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, और उसके कारण मेरे को बॉलिंग नहीं आ रहा है. बट फ्रॉम माई साइड आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई बॉलिंग. जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा आई ट्राई टू शोकेस माई पोटेंशियल. बीइंग एन ऑलराउंडर यू get recognized quickly. You can't just go with batting and try to play next level. So that it has to be some variety or something like that. या इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट रूल, तो मतलब ऑलराउंडर को नजरअंदाज करके तो अभी सोच रहा है कि मैं बैटिंग पे ज्यादा फोकस कर लूं. बिकॉज जैसे लास्ट टाइम हुआ था, फट 4 विकेट गिर गए, तो मैं जरा बैटिंग इंप्रूव करके आई कैन सीमेंट माई प्लेस डायरेक्टली इन द 11. Batting तो obviously no doubt मेरा first is batting. But yeah, I have been working on my bowling also. दोनों important है. ये impact rule के कारण you're adding one extra batsman and extra bowler. So all-rounder का कमी I think इसके कारण impact rule के कारण जा रहा है. इसीलिए So दैट्स व्हाई वो दैट इज व्हाई reason द नहीं बोल क्वेश्चन सकते. कम्स हियर. दैट इज व्हाई द क्वेश्चन कम्स हियर. एक पे फोकस करके डायरेक्ट सीमेंट कर लो टीम में जगह डायरेक्टली. Don't you think और इस Ayush कि अभी इम्पैक्ट में ऐसा कर लो, बी योरसेल्फ इम्पैक्ट में, कि मेरे को बॉलिंग चाहिए तो आई कैन ब्रिंग इन मान, अगर मेरे को बैटिंग चाहिए तो भी आई कैन ब्रिंग इन मान. हाँ, तो that's एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम अबाउट टू से कि अभी 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 देखो इस साल भी लिया है तो दे लाइक मान तो बैटिंग करता ही है. अगर 1-2 ओवर यूज करना होगा तो मान से करवा लेंगे. वो डाल रहा है लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो वैसे ही डाल रहा है. ऑलरेडी 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है. अगर हमको और एक ऑर्थोडॉक्स की जरूरत है, मान को हम 1 ओवर डला देंगे. वो 2 ओवर 16 to 14 जहाँ फील्ड स्प्रेड हुआ होता है, वेर आई कैन पिच इन 2 ओवर्स. बैटिंग तो मैं इंप्रूव कर रही हूँ. मेरा पावर रेटिंग हो गया, जो भी है, जो जो इस गेम के लिए चाहिए वो तो मैं कर रही हूँ. बट बॉलिंग मैं छोड़ रहा नहीं, क्योंकि बॉलिंग भी इंपॉर्टेंट है. आई कैन फिट इन. तो अगर मैं 2 ओवर डाल सकता हूँ तो वाई टू ब्रिंग अ एक्स्ट्रा बॉलर और अ बॉलर हु कैन बैट. सो एक कॉम्बिनेशन बनता है वहां पे टीम पे. सो आई एम वर्किंग ऑन माई बॉलिंग ऑल्सो. बट वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला मेरे को बॉलिंग डालने का. होपफुली इन फ्यूचर वो मिलेगा. ओ, अभी जिस टीम के लिए मैं खेल रहा हूँ इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं बना. पर होपफुली नेक्स्ट ईयर फ्रेश ऑप्शन है वापस. जिस टीम में जाऊंगा वहां बॉलिंग का ऑप्शन वो लोग यूज करेंगे तो व्हाई नॉट. आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई बॉलिंग ऑल्सो. So, like I said, your main role is right now the finisher. Do you want to be a finisher, or do you want to open the innings? What do you want? What do you want to do? The team is using you as a finisher. सी दिस ऑल्सो आई विल सजेस्ट एज एक टीम का कॉम्बिनेशन कैसा होता है. तो मेरा मेन प्रेफरेंस इज आई बैट टॉप ऑर्डर. तो अभी आई ड्रीम में मैं मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर की तरह खेला. कोई टीम में मैं पावर हिटिंग की तरह, आई मीन इसकी तरह खेलूंगा.
फिनिशर की तरह. So it depends on the team combination, what team wants me to do. So I am very open. अगर मेरे को टॉप ऑर्डर की तरह खेलना है तो ऐसा भी मैंने 1 साल किया हुआ है TNPL में. मान तू सिर्फ खेल, एक एंड खेल, तेरे को रिवॉल्व करके सब लोग खेलेंगे. सो एक एक साल में मेरा अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है. तो इनिशियली स्टार्ट TNPL विद मान तू वन डाउन जा, तू पूरा 20 ओवर्स खेल ले, तेरे रिवॉल्व होके बाकी सब खेलेंगे, तू यू जस्ट स्टे. सो इट डिपेंड्स ऑन द टीम सिचुएशन, कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है. तो अगर हिटर्स है तो मैं पहले चले जाता हूँ. अगर दे आर यूजिंग मी एज हिटर, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बहुत है. So being a left-hander or TNPL is more left-arm spinners dominated tournament. So आप देखोगे हर एक टीम में दो दो बंदा तो genuine left-arm spinner है, और एक पार्ट टाइम जो 2 ओवर डाल सके. तो लेफ्ट-हैंडर्स आर वेरी क्रूशियल. तो उसके हिसाब से प्लान करके सिचुएशन के हिसाब से बेचते हैं. TNPL manufacturers of left arm spinners, isn't it? Like even in the auction which had happened, भाई auctioneer ने भी बोला था भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर पे लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहा है भाई. मतलब there are so many left arm spinners in TNPL. Like we've been Exactly. manufacturing. So Exactly. I think Butter is back. उसका ऑडियो वीडियो सब सही हो चुका है. बटर तेरे को क्या कुछ पूछना है? हाँ यार, एक सवाल तो तूने ले लिया मेरा, बट आई एक्चुअली Okay. वांट टू नो द फर्स्ट टाइम दैट यू फेल्ट starstruck. मतलब obviously you played with and against so many cricketers, right? You mentioned so many names. You play with, international level cricketers who played international tours and stuff like that. So the first time that you met someone, and you or an international cricketer, and you felt कि यार, यार ये बड़ा cricketer है, oh my god, how am I going to behave? What was that one moment जो तेरे को ऐसा लगा कि यार this is it, I've made it, मिल लिया इससे? Oh, it was during 2018 season in TNPL when Dinesh Karthik played for us. Oh yeah, So yeah, that moment was really special because he was doing well. He was doing well for RCB, फिर Indian cricket team के लिए he was making a comeback, क्योंकि उसको yes, चांस नहीं मिला था, वापस वो आके comeback कर रहा था, वो सिचुएशन में था. बट yes, उसने उस टाइम टाइम लेकर he played only 2 games I उस remember, season. I remember, yeah, 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 So that was very, I mean, playing with Dinesh Karthik, it was like I don't know how to react. But oh, he just came and he told me like, Man, you have been doing really well. Just play a natural game. ऐसा कोई चेंज होने की, अभी मैं आया हूं तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं. यू बी नॉर्मल, डू नॉर्मल थिंग्स. So oh, I just want to say something about the I play with Washington Sundar, Hanuma Vihari. They are pretty normal people. yeah, yeah, So yeah, they just come, they execute their plans well. They stay in the moment. उनको पता है कि इस सिचुएशन में क्या करना है. That's why they excel. मतलब वो सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. दे हैंडल द सिचुएशन रियली वेल. तो उस टाइम जब दिनेश कार्तिक, उस टाइम वी वर लाइक एक वन मैच ओनली ही प्लेड, तो वी वर लाइक 40 फॉर 3 और 4. फ्रॉम देयर दिनेश कार्तिक एंड अनिरुद्ध श्रीकांत, they both played and scored some 60 odd runs. So the way he handled the situation, so that thing was really inspiring and it was a great experience. मतलब no it was doubt, man. No it's a doubt, good no doubt. experience. And DK से मिलना is all of our dreams. I mean, we are massive DK fans तो across the बेसिकली panel. मान So हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि डीके को हमारे पॉडकास्ट में ले आ हाँ भाई. भाई, ले आ भाई, ले आ please. भाई DK तू होगा सबको watching. बोल रहा है DK कि इसको मिला, मैं सबको बोल दे तू इसको लेके आ, इसको लेके आ. DK, if बेसिकली you're भाई तेरे watching, को भाई गाली तेरे किस किस से पड़ी भाई? गाली किसके? अश्विन से, वॉशी से, डीके से, किसकी से पड़ी? अच्छा, ये बोल I भाई. know you- अनिरुद्ध श्रीकांत से तो पक्का पड़ा है ब्रो. गाली पड़ी तो बाबा की गाली पड़ी. खाली से स्टार्ट बुलाता है वो, तो तू मान करके बुलाता ही नहीं है. ये इधर आप, ये ऐसे ही है उसका, बस बस वैसे ही है. So, और हनुमा विहारी भी ऐसे ऑफ द फील्ड तो एकदम चिल है, ऑन द फील्ड आया ना फर्स्ट मेरे को गाली से बुलाएगा, मान क्या कर रहा है, like, ये वो, मतलब सब ऐसे ही है sorry. एकदम. ए वाड़ा मान इंटरप्ट பண்ற. ये चलता होगा फील्ड पे. उसका तो अलग ही है. वॉशी वॉशी क्या करता है, वो आके घूरता है, बस उसकी वो आईज का वो है, वो जैसे ही मालूम पड़ गई भाई तू कुछ गलत कर रहा है, वो जिस तरीके से घूरता है ना, मालूम पड़ जाता है कि भाई तू सही से नहीं डाल रहा है, बराबर से डाल ले. मतलब ऐसा है उसका, ऐसा है, अलग लेवल का एग्रेशन है उसका. Since It's like everyone is that. stealing each other's questions right now, ये चल रहा है कि सब एक दूसरे के क्वेश्चन स्टील करके सब पूछ रहे हैं. तो मान I will steal Ayush's question and I'll ask you one thing. If you had to choose one IPL team you would like to play for, who would it be and why? First it would be Mumbai Indians.
क्योंकि ओहो, मेरे को ओके TNPL, वन सेकंड, ये TNPL सब चले गए यहाँ से. सर, Vedant has left the chat because a person from TNPL wants to play in Mumbai Indians. ये क्या हो रहा है? हमारा चैनल बैन करने के लिए सब साजिश कर रहे हैं इधर. No, I can Yes, man. understand. RC मुंबई इंडियंस है, ठीक है सेकंड तो सीएसके है. मुंबई इंडियंस का रीजन क्यों है, मेरे को उनका कल्चर बहुत पसंद है. गांड मारेंगे और तेरी इसलिए. पैसे मनी मनी. अंबानी का कांटेक्ट भी है. और उनका कल्चर और उनका जनरली महाराष्ट्रियन पीपल का माइंडसेट बहुत अलग लेवल होता है. दे आर वेरी स्ट्रांग मेंटली. सो उनका कल्चर क्या है वो तो आई जस्ट वांट टू गेट टू नो अबाउट देम इवन मोर. सो फर्स्ट इज मुंबई इंडियंस, सेकंड इज सीएसके. MS धोनी, बिग फैन. उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने की बहुत, इट्स अ ड्रीम. एक्चुअली इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी क्रिकेटर. सो यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम. इसके लिए सीएसके, बट फर्स्ट आई वुड से मुंबई इंडियंस. if you come into CSK Automatic. in another 5 years, hopefully, I'm sure MSD will be in the dressing room still. अरे भाई 10 साल तक भी रहेगा था. वो MSD कहीं रहेगा नहीं भाई. जाने Disney brought him back. They're going to make him do this till he's 90. एज अ वाला. मेंटर कुछ तो होएगा ही वो. हाँ, MSD will always be there. I think that's a, वो या तो खेलेगा या तो फिर IPL के रूल्स बेंड कर देगा, लेकिन वो रहेगा. That's happened this year, but he'll be there. Let's Shubham. Is there anything else you would like to ask Maan? Something which we all missed, or anything which you would like to ask? So मैं तमिलनाडु क्रिकेट बहुत religiously फॉलो करता हूँ, and I talk to मान about it. Like we talk about players जो मतलब इतने फेमस भी नहीं है, but we talk about it because we know, and I think I can only talk to him about this because हम दोनों एक मतलब वो players को जानते हैं and all of that. I remember जब उसका TNPL मैचेस होता है तो I till date, like from first TNPL till now, मैं अपने नोट्स में लिखता हूँ ओवर नंबर 4.5 मान, वरुण चक्रवर्ती टू मान, what went wrong, how did he play his shots, क्या गलत होता था. And at the end of every match, I will call him and we will discuss about all of this. So I remember that match when he scored this year, when he scored 50 as well. Like everyone were congratulating him. And before that, I spoke to him. I'm like, I'm going to talk to you, but I'll not talk to you today. I'll talk to you tomorrow because I don't want to ruin the moment that you had. So next day I called him and I'm like, the match was really good. You scored 50 runs. You saved your team and all those good. But there was something wrong that you did was your running between the wickets. I told him. I'm like, Correct. there was several times that you were going to fall and that was not a good sign of your running between the wickets. So the thing is, I absorb his game. I learn from it. And that's how I do it with other players as well. And we even talk about his first division matches that he plays. It's not about TNPL alone. So I've followed his journey very closely, and I know that you have played for 4 teams in first division. You started off with Aruna CC, then you went on with India Pistons for 3 years, then you played for MRF under Washi for 3 years. Right now, you're playing with Nelson Sports Club with Hanuma Vihari. So you played for 4 different teams. What has been different with each teams, and how has it affected you individually? Like, have you been a better player over the years because you've changed teams? Like, what has it been for you? Yeah, definitely. First, I want to say Shubham, yeah, he does after every game, he sends me notes कि मान तू इसका इस जगह पे ऐसा करना था, उस जगह पे ऐसा करना था. And I would agree with this point कि मेरा रनिंग टेक्निक थोड़ा गलत है. तो जब भी मैं भागता हूँ तो मेरे को लिम्प करने की ऐसा लग रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ. तो इट हैपेंड विद मी. एंड आपको ये सेमीफाइनल की क्वालिफाइड 2 में भी हुआ था मेरे साथ. जैसे ही अंदर जा रहा था, आई वाज अबाउट टू फॉल, और वो रील बहुत बहुत ज्यादा फेमस हो गया. सबने मेरे को बहुत ट्रोल किया है वो रील देख के. सब वो रील एटलीस्ट एक 40 to 50 क्रिकेटर्स ने मेरे को भेजा होगा पर्सनली इंस्टाग्राम पे, भाई क्या कर रहा है तू, और वो इतना गंदा म्यूजिक डाल के. सो या आई एग्री विद दिस पॉइंट. आफ्टर एवरी गेम ही यूज्ड टू सेंड मी अ नोट कि मान तू ऐसे इंप्रूव कर सकता है. इवन दो आई डू वेल, बट स्टिल ही इज लाइक एज अ फ्रेंड, तू यहाँ इंप्रूव कर सकता है. आई वुड टेक हिम, मतलब हाँ, आई वुड टेक हिज पॉइंट एंड या ट्राई टू नोट इट डाउन. एंड एज ही सेड, आई स्टार्टेड ऑफ विद अरुणा सीसी फर्स्ट डिवीजन. वो टीम हमारा सेकेंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन प्रमोट हुआ था. तो माय जर्नी विद फर्स्ट डिवीजन वाज लाइक ओके, एवरीवन वांटेड टू एक्सपीरियंस फर्स्ट डिवीजन. फर्स्ट डिवीजन क्या होता है, सब बोलते हैं कि फर्स्ट डिवीजन से रणजी ट्रॉफी जाता है, बुच्ची बाबू मिलता है, मतलब ऐसा. तो फर्स्ट सीजन आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई डिडंट नो मच अबाउट फर्स्ट डिवीजन क्रिकेट एंड आई प्लेड एज एन ओपनिंग बैट्समैन फॉर अरुणा सीसी. आई डिडंट प्ले मच गेम्स. आउट ऑफ 11 गेम्स मैंने सिर्फ 2 गेम खेला होगा.
तो उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं मिला. देन आई एज आई टोल्ड यू सेकंड डिवीजन मैंने वापस में सेकंड डिवीजन खेला क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस नहीं था. तो नो वन वाज रेडी टू पिक मी अगेन फॉर फर्स्ट डिवीजन. तो आई वेंट फॉर सिलेक्शन. एवरीवन वाज लाइक मान हम तेरे को ले लेंगे बट तेरे को अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं मिलेगा. Then I discussed with my coach. He was like, "Man, तू एक साल सेकंड डिवीजन ही खेल, अच्छा कर, फिर तेरे को ऑफर्स आएंगे." तो आई वाज वेरी रिलेक्टेंट क्योंकि यार फर्स्ट डिवीजन खेल लिया वापस नीचे क्यों जाना, एक साल वेस्ट हो जाएगा. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ क्रिकेटर. I mean, every year is important. So my coach was like, कोई नहीं, trust me, do well, you will get offers. So I again went to second division, performed, जैसे मैंने बोला 2 balls 8 मारा and one of the coach saw me. From there he picked me. I played for India Pistons next year. वो मैच India Pistons में ही था. तो India Pistons he picked me. India Pistons ऐसी टीम है जो every year टेबल में 6 7 खत्म करते हैं. तो इट्स लाइक सेफ टीम. तो उनका माइंडसेट भी ऐसा ही है. तो जनरली इट्स अ सेइंग भी आप किसके साथ हो वैसे बन जाते हो. तो वैसे वो टीम वैसी थी. मेरे को एक फर्स्ट डिवीजन में ऐसी टीम में जाना था जहां मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले. तो आईपी वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. मैं हमारी टीम में सिर्फ 15 बंदे थे तो आई स्टार्ट ऑफ विद आईपी. मैं अच्छा भी नहीं करता था तो भी दे यूज्ड टू गिव मी मान नो यू हैव पोटेंशियल, तू ही डाल तू ही डाल तू ही डाल. तो फर्स्ट 3 इयर्स आई गॉट एक्सपीरियंस विद आईपी. ओके अभी मैं अच्छा, मेरे को फर्स्ट डिवीजन का टेस्ट मिल गया है. Now, if I get offers, I might move to some other team because I've bowled around 200, 300 overs in first division, batted around 600, 700 balls overall season में. तो मेरे को टेस्ट मिल गया है. तो देन आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम एमआरएफ कि आजा, यू हैव बीन डूइंग वेल, देखो यहाँ पे बेटर फैसिलिटी है, बेटर सब क्रिकेटर्स आर प्लेइंग फर्स्ट क्लास, तो इसके साथ रहेगा तो तेरा गेम भी इंप्रूव होएगा. ऑब्वियसली इधर देख रहा हूँ सुंदर है, इधर देख रहा हूँ तलेवन सदगुना, मैं इधर देख रहा हूँ मोनिश सतीश, ये सब फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं. सब लोग आउट ऑफ 11 पीपल एवरीवन इज प्लेइंग फर्स्ट क्लास. तो ऑटोमेटिकली अपना गेम इंप्रूव होएगा ही अगर आप उनके साथ रहोगे तो. सो या एमआरएफ 3 साल खेला. इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. वहां पे इट्स ऑल अबाउट विनिंग चैंपियनशिप. उनका माइंडसेट अलग है. आईपी का माइंडसेट इज लाइक सेफ. ओके हम 7th 8th आ गए, ठीक है, अभी हमारे सामने कोई अच्छी टीम भी आ गई तो लाइक नहीं रे, हारे तो भी कुछ नहीं, हम ऐसे ऐसे. इट्स लाइक दैट माइंडसेट. बट एमआरएफ नो, यू हैव टू विन एवरी गेम नो मैटर व्हाट. उनका माइंडसेट ऐसा है, चैंपियनशिप जीतना है, चैंपियनशिप जीतना है. ये मैच अगर हम फंसे हुए भी है कैसे निकाले बाहर. फिर वहां से मेरा बैटिंग ऑर्डर नीचे था. मैं नंबर 7 नंबर 8 ऐसा था. फिर नेल्सन अगेन दे ऑफर्ड, मान आई विल गिव यू नंबर 4 बैटिंग एंड यू विल बोल. Then I was like, okay, it's better to move to Nelson where I get more opportunity to bat higher the order और उसमें और experience है. Then I moved to Nelson because of better opportunity. वहाँ पे हनुमा विहारी वो एक अलग लेवल का प्लेयर है. उसका mindset is different. Killer instinct. No matter what, never give up attitude. So first year with Nelson, I scored 700 runs. That was my proper season as a proper top order batsman because MRF के लिए I was batting number 7 as more of a bowling all rounder for MRF. Then when I moved to Nelson, it was proper batsman. You bat at number 4, take the responsibility, take the team through. First season we ended as runners up of the first division league. I scored 700 runs. अच्छा था, season was good. I scored 200s, 171 odd and 100 on a turner. It was a very different experience. जब मालूम पड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 नंबर 4 बैट्समैन की वैल्यू क्या है, कैसे गेम को लेके जाते हैं, जब फंसा हुआ है तो उसको लेकर जाना, टेक इट डीप टेक इट डीप टेक इट डीप. So Nelson was a different experience where I matured more as a batsman. I've personally seeing you grow from the time you joined MRF. I think that was one of the best decisions that you took. And then you went on to Nelson, and I remember you scored that 173 with Robin Best against the In Hawks. that match, we were 131 for 5. From there, I scored 173, and Robin just he has played 100 first class games for Rajasthan, and he has played for Delhi Daredevils also. From there, we fetched on something 360 odd partnership. So वो एक अलग experience था. 173 each. He also scored 173. So that was my first game for the Nelson. So yeah, I cemented my place. So Yeah. we got to know about the entire journey of मान. सबने अपने अपने सवाल पूछे हमको. इसका
जर्नी मिला. दिस शोज एन इनसाइट टू अ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स लाइफ, अ स्मॉल थिंग, राइट? दैट हाउ मच दे हैव टू गो थ्रू, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्वड. ऐसे अपन लाइक हम हमारे जैसे कई सारे पॉडकास्ट है जो कुछ भी कमेंट पास कर देते, कुछ भी कर देते, बट वी एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ क्रिकेटर गोस थ्रू, राइट? कितना सारा उनको, what are the things they have to do, sacrifices, mindset, what he spoke about. I've had this personal conversation with Man about mindset, and he's told me that कुछ टैलेंट खाली इनफ नहीं है, इट इज अबाउट माइंडसेट. एंड यू, दैट्स व्हेन यू बिकम from say a Ranji level to a international level, or a to a, you become a great only because of your mindset. We all know that, right? So that's the entire journey of Man. We'll do a small fun segment with Man before we let him go. Man, I want you to choose fast bowlers, this or that karke. I'll give you, like, see, you keep choosing. Now, for example, I say Bumrah and Zahir, and you say Bumrah. Then I'll give you another name with Bumrah, and you keep choosing, and then at the last, let's see who's your favorite fast bowler. ऐसे Yeah, पता okay. चलेगा, right? You understood the game, so let's do this. We'll start with a couple of easy names for you. Do you like Shahin Shah Afridi, or do you like Mitchell Johnson? Mitchell Johnson. Oh, I expected Man to take a Pakistani name. That's why I gave him Pakistani name. But okay, okay. Mitchell Johnson or Mitchell Stark? Mitchell Johnson. Oh, Mitchell Johnson. You like his aggression, do you? Yeah, Okay, next let's go. level, next level. Mitchell Johnson or Zahir Khan? Zahir Khan. ओ इंडियन भाई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. मान आज बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स दे रहा है, ये गलत बात है. ग्रुप पे तो कुछ और बोलता रहता है. ओके. रूप पे जहीर खान. रिवर्स साइकोलॉजी है भाई. जहीर खान और इरफान पठान? टफ वन. इरफान पठान. Oh, he switched, but I would still prefer Zahir Khan. But okay, he switched to Irfan Pathan. Okay, Irfan Pathan or Shoaib Akhtar? शोएब अख्तर. Oh, he's taken the Pakistani name finally. Shoaib, last, Shoaib Akhtar or Bumrah? नो डाउट बुमराह. ओके, चलो बुमराह से ही खत्म करना था. वी आर ऑल बुमराह फैंस हियर, सो आई जस्ट वांटेड टू एंश्योर कि बुमराह का नाम आ जाए लास्ट में. पाकिस्तानी का नाम ले लिया, सो दैट्स ऑल विद मान. इफ एनीवन, इट्स ओपन टू ऑल. कोई अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो मैंने मिस किया हो, लाइक वी हैव अनदर 5 minutes, किसी को कुछ पूछना हो, वेदांत, शुभम, I बटर. I have a question. Sorry, थोड़ा serious हो जाऊंगा मैं. So I've worked in this industry for a year and a half. I actually wanted to talk to you about it as well. तो यार sports science की बहुत बात होती है. We've heard a lot. विराट कोहली's come on air and told कि आप कैसे train कर रहे हो, आप कैसे prepare कर रहे हो for situations, right? I want to know from a TNPL level point of view, right? जो sports, you have sports nutrition, mental sports mental health, all of those things. Where are these leagues standing in terms of sports science, and how much are you exposed to it as well? Because that's something that I think now India is getting warmed up to. But has it reached the TNPL, and does it actually work as well? Because that I'm not sure. I know कि बहुत लोग use कर रहे हैं उसको, but काफी लोगों के लिए effective है, काफी लोगों के लिए नहीं है. So what are your thoughts on that? Where is it right now, and क्या है उसका इफेक्ट ऑन क्रिकेटर्स? डेफिनेटली उसका इफेक्ट तो बहुत है. ऑफ लेट आप देखोगे, मतलब इन दिस 3 years, पहले टीएन पे जब स्टार्ट हुआ था इतना नहीं था. तो 2018 2019 में, 2018 मेरा सीजन बहुत अच्छा गया था. तो पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग कि मान की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है. तो आई रिमेंबर इन वन गेम दैट सीजन आई स्टार्टेड वेल. अश्विन आया बीच में, इट वाज अगेंस्ट डिंडिगल ड्रैगन्स. ही केम एंड ही वाज लाइक, इसको बाउंसर डालो भाई, आउट हो जाएगा, आगे का बॉल मारता है ये. लिटरली वो शॉट में कवर से मिड विकेट जा रहा है, वो बीच में बोलते जा रहे भाई इसको बाउंसर डालो, आउट हो जाएगा. नेक्स्ट बॉल ही बोल्ड अ बाउंसर एंड आई गॉट आउट. उसने ही कैच पकड़ा. सो वो सब कैसे हुआ वो हमको मालूम नहीं था पहले. जब टीएनपीएल में आया वीडियो एनालिसिस कि मान की स्ट्रेंथ क्या है, उसको आगे डालना ही नहीं, आगे डालते तो छक्का मारता है, इसको बैक ऑफ लाइन डालेंगे, बाउंसर डालेंगे. तो ये एक मेरे को 2019 में मालूम पड़ा कि यहाँ मेरे को इम्प्रूव करना है. मेरा अगर मेरे को नेक्स्ट लेवल जाना है तो यहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा. तो जब नेक्स्ट ईयर में आया, मेरे को कोई ऊपर नहीं डालता था. ऊपर तो भाई इसको डालना ही नहीं है. और जब मैं आता था मेरे को लेफ्ट आर्म स्पिनर हटा दिया. मान आया, लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके आना ही नहीं है, इसको फास्ट बॉलर लेकर आएंगे दोनों एंड से और बाउंसर मारेंगे.
और बाउंसर भी ऐसा नहीं कि इतना ऊपर यहाँ पे हो तो क्या है, वन बाउंस भी नहीं मिलेगा तो उसको मारना है, एक छक्का मारेगा कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट ईयर आई इम्प्रूव माई पुल शॉट्स, कट शॉट्स, तो वो सब मैंने इम्प्रूव किया। तो इट मेक्स अ ह्यूज रोल। ये मेरे को इनिशियल ईयर्स में मालूम नहीं पड़ा, बाद में मालूम पड़ा। एंड अबाउट मेंटल कंडीशनिंग, ओ इट प्लेज एन इमेंस रोल। Now I have been working with mental conditioning coach, so it helps you stay in the present. The Okay. more you are in the present, your potential comes out. So अभी भी अब कोई मेरे को पूछेगा क्या, what are you, I'm just talking to you. My thoughts are generally क्या होता है, पहले आप पास के बारे में सोच रहे हो, कुछ और सोच रहे हो. If I'm talking to you, I'm talking to you. Correct. So the more you are in the present, your true potential comes out. So वो mental conditioning मैंने अभी classes लिए, तो I've been doing that, working on that. So more you are into it, and एक stat मिला है, only 10% people follow this mental conditioning का, to staying in the Wow. present, Wow. meditation and stuff. Even Okay. though people know about it, but Yeah. people don't follow. It's They very don't simple follow. thing. It's Yeah. very simple. भाई बोल देगा भाई present मेरे सब ठीक हो जाएगा, but it's not that. Yeah. ये Yeah. easy नहीं है. You have to meditate, you have to be mindful about it कि okay, I'm doing this job, तो I'm doing this job only, not thinking about Correct. something else. Correct. And लोग Correct. बोलते हैं multitasking. It's very difficult. You can't do multitasking. If you do multitasking, your focus deviates. The Absolutely. more सही you बात. are in the present, your true potential comes out. So it definitely makes a huge role. Mental conditioning, video analysis, सब role, सबका role बहुत important है. Nutrition. I think it Correct. makes a huge role. It's not only about the batting, bowling skill का कुछ है ही नहीं. It's Right. about every aspect, your lifestyle, सब चीज. Then only you become that cricketer, that exceptional. ऐसे तो Correct. सब इस लेवल में crowd है, ऊपर crowd नहीं है. Super तो crowd नहीं है. जो वो continuity से करता रहता Correct. है, तो Correct. that makes a huge difference. Wow. Wow. Fantastic. Mental यार. सही. conditioning can be as simple as like what I'm sure all of us have watched the Virat Kohli and the Gautam Gambhir episode today. Yeah. It was a shock for all the cricket fans of India, but उसमें भी उन लोगों ने बात किया था. Gumby spoke about the Napier test and Virat Kohli Yeah. spoke about the 2014 series, right? And it's about like what Maan mentioned, it's about staying in the zone, staying in the present. They use different techniques. Gambhir only listened to Hanuman Chalisa for 2.5 days so that he stays in that zone. Virat Kohli spoke, I mean, said Om Namah Shivaya before every ball in 2014, right? He's that guy who said, Ki, do you think I'm the Puja Part types? And he still so, so it's about staying in the zone. It's about staying in the present, like Man said. So it was crazy. We got to see the unfiltered Man here. We got like cricket पंचायत में ये होएगा. We will get you more and more cricketers. आप कमेंट में डालिए किसको लेके आना है, तो कोशिश करेंगे. आएगा नहीं. बाकी मान के ऊपर है. सब लोग मान को जाके कमेंट करो कि लड़कियां प्लीज गो एंड कमेंट मान वी लव यू वी वांट दिस क्रिकेटर. वो हमको हेल्प करेगा प्लीज. सो डेफिनेटली मेरे साइड से जितना भी होगा, आई डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग मोर क्रिकेटर्स, सो दैट उनकी जर्नी भी मालूम पड़े आपको, और शेयर भी हो, मतलब कैसे कैसे उन्होंने, हाउ दे रीच दैट लेवल. इट्स चलो कोई इट्स बात नहीं. इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ. ब्रिंग सौरव गांगुली फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, बस और कुछ नहीं चाहिए. 3-4 साल रुक जा भाई, उस लेवल में जाने के बाद पक्का आई डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट. दैट कॉन्फिडेंस वी ऑल वांट. तो तब तक हमारा रेडी लेके आ जाएगा. So that was Man for you guys. We'll keep getting you cricketers. We'll be trying to get someone from Karnataka Premier League or any other Premier Leagues. We'll be trying to get you cricketers from everywhere in India. That's a promise to you guys. See you in the next episode. Bye.